डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम अपना डिस्कशन ह्यूमन राइट्स लॉ से ह्यूमैनिटेरियन लॉ की तरफ स्विच ओवर कर रहे हैं। एंड द बेसिक अंडरलाइनिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इज दैट ह्यूमन राइट्स लॉ एक्चुअली ऐसे हुकूक और राइट्स को देता है जो इंसानों को अमन की हालत में मिलने चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी का मयार ऊपर चला जाए, और उसमें प्रोटेक्शन भी आता है, प्रमोशन भी आता है। प्रमोशन उन चीज़ों का जो इंसानों में पहले से अच्छाइयाँ हैं उनको प्रमोट करना, एंड प्रोटेक्शन के मीन्स में जो चीज़ें गलत हैं, दोज टेंडेंसीज जो उन राइट्स के रास्ते में आ सकते हैं, जैसे इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और डिसेबिलिटी एट्सेट्रा, उनको ख़त्म कर देना। इसमें पॉजिटिव या इस एफर्मेटिव एक्शंस की ज़रूरत होती है और इसी तरह लॉज बनाने की ज़रूरत होती है। तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का जो डिस्कोर्स है वो अभी तक हो गया, बट ह्यूमैनिटेरियन लॉ वो लॉ है which regulates the conduct of hostilities or warfare, and it intends to minimize the effect of wars. Humanitarian law से actually दो terms primarily जुड़ी हुई हैं. One is called as jus ad bellum and another is called as jus in bello. ये जो jus ad bellum है, it means it justifies, or it tries to seek a legitimate justification of transition from the times of peace to war. जंग किन हालातों में जायज़ हो जाती है या necessitate हो जाती है, because times of peace eternally हों, उसके लिए negatively defense of the conditions of peace against aggression or threats or any other hostilities against directed towards the peace quite likely है. So it is kind of justification from times of peace to war. ये peace है और ये समझे war है, and in times of peace जो rights देने हैं वो तो human rights हैं, and that's why there is human rights law. But humanitarian law क्या है? Jus in bello is actually जंग की हालात के दौरान जंगों को कैसे लड़ा जाए और कैसे नहीं लड़ा जाए, किन चीज़ों से जंग के दौरान बचा जाए. Actually it tries to regulate the conduct of hostilities and tries to mitigate and minimize the effects of war. So during the war it makes provisions for कि कैसे weapons हों, किन पे हमला करना चाहिए, किन पे नहीं करना चाहिए, based on certain principles. For example, वो principles हम आगे के lectures में समझेंगे. For example, there is principle of proportionality कि जितने नुकसान करने से दुश्मन का टारगेट अचीव हो जाएगा उतना ही करना चाहिए. It should not be disproportionate. There is principle of discrimination, that there shall always be a discrimination between legitimate target and a target which is not legitimate or neutral, जो कि neutral है. या persons hostile combat, जो persons they are not actively engaged in the hostilities, उनको target नहीं बनाना चाहिए. So that is just in bello. So these are two terms जो humanitarian law से related है. What humanitarian law tries to endeavor is it tries to minimize the effects of war by regulating the means and methods that should be or may be adopted in a war and how hostilities should be conducted. Now there is a history behind all this, और बहुत लंबी चौड़ी history है. rather इंसानों की जंग व जदल की खुरेजी की इतनी बड़ी तारीख है कि कमज़ोर और मजबूत की लड़ाई तो होती आई है, बट wars in the name of territory accessions or defense of territories and in the name of just war etc. So जो just ad bellum है, इसी में है just war का concept, which many of the theorists support, many of them do not. For example, इसको हम historically one by one ले लेंगे. Let's talk of, for example, there is
There is an author known as Leslie Green. The author points out that there is evidence of warfare regulations both in ancient Chinese history and ancient Indian history. We'll come to the Indian part, but ancient China mein, yes, there is actually a book known as Sun Tzu's book. Sun Tzu. Sun Tzu's book जिसका नाम था The Art of War. It was a detailed account of based on spread over 13 chapters related to military war or warfare, etc. So it's known as the oldest ancient, it's known as the oldest military treatise. So it is regarded as the oldest military treatise of 13 chapters जिसमें सन तzu बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं कि किन चीज़ों पे हमला करना चाहिए, कैसे हमला करना चाहिए, and it is as old as 5 BC, 5th century BC. So this is a part of Chinese history. इसी तरह there is one more Bushido. There's a code of war in Japanese history. It's related to Japan and probably relates to 12th century or 13th century. Don't remember fully, but it is there around 12th century. India के बारे में Leslie Green says that although the author observes there are elements, but you would find that some authors contradict it. There is a author known as Surya P. Subedi. Surya P. Subedi. This author writes that Hindu mythology or philosophy is based on that there is no conception of a just war or state का protection against the external aggression. इसका कोई means नहीं है. But let's try to read between the lines because the discourse gives us much beyond them. For example, there is a complete treatise on this Mahabharata, the epic जिसे हम जानते हैं, and many of the chapters give some elements of humanitarian law there. For example, the war between Ram and Ravana when Sita was apprehended and abducted by Ravan, and similarly the war of Kurukshetra between Kauravas and Pandavas, and the sayings of Pandavas to each other regarding the war कि ये करो ये नहीं करो, they can be regarded as historical accounts of humanitarian law. इसके अलावा भी ये हम old history की बात कर रहे हैं. If you look at the Islamic philosophical standpoint on humanitarian law, Islam does not regard peace as it does not accept it as an eternal reality because there might be exigencies of war. So together we would not go into the detail, but together in Quran and Fiqh and Sunnah you'll find that there are some commandments regarding the war. For example, Quran ने 5 चीज़ों को मना कर दिया categorically that they are not legitimate targets: elderly persons, women and children and clergymen and places of worship. And then the commandments through companions जिसमें Caliph Umar के मशहूर हैं that do not attack infirm persons, insane, trees and plants, crops and granaries, storages and cathedrals and those places of worship जो भी होते हैं और जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है, जो औरतों की पनाहगाह है, और those persons who raise their arms up in surrender, etc. But the recorded history account जो है, let's start with it, with this person known as Hugo Grotius. I don't know whether ये spelling ठीक है कि नहीं, but Hugo Grotius, जिसे हम father of international law भी कहते हैं, he is a Dutch jurist of 17th century और इसने 1625 में जो मशहूर किताब लिखी जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी भी जाती है कि क्या लिखी इसने, he wrote a book known as De Jure
डी जोर एक पेसीज, डी जोर बेली एक पेसीज नाम है इसका, डी जोर बेली एक पेसीज, जिसका मतलब कमोबेश ये है लॉज ऑफ वॉर एंड पीस। तो इसमें एक बुक, ये इट वाज एक्चुअली अ सेट ऑफ 3 बुक्स, और इसमें एक बुक स्पेसिफिकली ही डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस कंडक्ट ऑफ हॉस्टिलिटीज एंड वॉरफेयर, जिसका नाम ही था ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। एंड उसमें डिटेल्ड अकाउंट उसने दिया, एंड ही रेफर टू द ग्रीक एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजीज एंड फिलोसफीज, जिसमें उसने हिस्टोरिकल अकाउंट दिया ग्रीक्स का, कि वो जंगों में किन चीज़ों का ऑब्जर्वेंस करते थे। एंड ही एक्चुअली इट वाज द टाइम जब दूसरी तरफ से जॉन मिल्टन थे, 17th सेंचुरी में, जब जॉन मिल्टन ने लिखा पैराडाइज लॉस्ट, बिकॉज ह्यूगो ग्रूटियस ने, आई एम जस्ट टेलिंग यू हिस्टोरिकल अकाउंट, ह्यूगो ग्रूटियस ने एक किताब लिखी थी, एडम्स एक्जुल, द एक्साइल ऑफ एडम, एडम्स एक्जुल, एडम्स एक्साइल। सो इसको पढ़ के फिर बहुत मुतासिर होने के बाद मिल्टन ने लिखा पैराडाइज लॉस्ट and paradise regained. So it was the times of these. So Hugo Grotius wrote this book, and one book was specifically dedicated, जिसमें उसने ancient Greek mythology से बहुत सारी forbidden practices को recall किया कि ये वो लोग they regarded as these things as forbidden practices in war. For example, use of poison or poisonous weapons. फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी बहता हुआ होता था और बहते हुए पानी में जहर मिला देना, इट वॉज रिगार्डेड एज illegitimate or prohibited during the conduct of hostilities, even in the times of ancient Greek, according to this Hugo Grotius. And इसी तरह pillage, जिसे हम लूट या प्लंडर कहते हैं, pillage of properties of civilians, properties of civilians, इसी तरह women हैं, children है, and prisoners हैं, all they were regarded as, इसी तरह rape was regarded as a forbidden practice during the war. There is one more person जिसका contribution है historically towards this concept of any development of ancient humanitarian law. हम अभी humanitarian law की एक historical account आउटलुक की तरफ जा रहे हैं कि हिस्टोरिकली ये कैसे डेवलप हुआ, starting with the philosophies of mythologies in Japan and China and India and civilizations, and then जो recorded history है उसमें ह्यूगो ग्रूटियस के इस बुक से, एंड उसी टाइम ह्यूगो ग्रूटियस के टाइम के बाद ही थोड़ा सा एक और यूरोपियन जूरिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मार्टिन, फ्रेडरिक वॉन मार्टिन नाम था एक्चुअली इनका, और इन्हीं के नाम पे जो मशहूर है दैट इज़ नोन एज मार्टिन्स क्लॉज, जो अक्सर ट्रीटीज़ में पाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की ट्रीटीज़ में. वी विल एक्सप्लेन इट लेटर. मार्टिन्स क्लॉज में एक्चुअली इट्स एन एम्बेडेड और इम्प्लाइड क्लॉज इन एवरी ट्रीटी दैट अगर किसी चीज़ को लेकर साइलेंट है रिगार्डिंग द चिल्ड्रन एंड सिविलियंस, इट शैल बी रेड इन टू दैट, वो ज़रूरी नहीं है उसको लिखा हुआ हो. सो दैट इज़ नोन एज मार्टिन्स क्लॉज, और ये पहली बार ये मार्टिन्स क्लॉज ऑन हिज रिकमेंडेशन इट वाज इंक्लूडेड इन द हेग कन्वेंशन ऑफ 1899, जो सेकेंड हेग कन्वेंशन थी 1899 की ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. बट फ्रेडरिक वॉन मार्टिन अनदर यूरोपियन जूरिस्ट जिसने इसकी तरफ कंट्रीब्यूट किया, or he actually was a contemporary of this Hugo Grotius, almost a contemporary, and then a flicker, or you can say a least element of humanitarian law can be found before actual commencement of humanitarian law discourses in 1856, जो कि declaration of Paris थी, जो Crimean War, at the end of Crimean War में Paris Declaration,
and they agreed on ये 1853 से 56 तक ये war चली and they agreed on certain points and जिसमें humanitarian law के थोड़े बहुत elements थे and after 1856 actually is this shift in the history जिसे हम ये कह सकते हैं it's a watershed moment in the history in 1859 with the Henry Dunant's advent or appearance in the scene और एक्चुअली जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ की डिस्कशंस और डिस्कोर्सेस हैं दे रिवॉल्व अराउंड द एडवेंट ऑफ दिस मैन ऑन द स्टेज 1859 में हेनरी डुनांट का जो कंट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सोल्फोरिनो इन इटली अब उसी की बात करेंगे दैट हेनरी डुनांट एंड contribution towards humanitarian law development 1859 हेनरी डुनांट कौन था ये एक ताजिर था he was a businessman Swiss businessman and in 1859 there was a war एक जंग हो रही थी इटली में एक तरफ उस जंग के ऑस्ट्रिया थी और on the other side of the war there was this जिसे हम फ्रेंच अलायंस कहेंगे या they were known as French Piedmontese Alliance जिसमें फ्रेंच के साथ साथ जो है वो कुछ और फौजें भी थी अलायंस में एंड इन शॉर्ट इसमें ऑस्ट्रिया हार गया और फ्रांस की तरफ से नेपोलियन थर्ड जो है वो लीड कर रहा था This battle lasted for a day only. एक दिन में ये जंग खत्म हो गई. But in a single day, more than 3 lakh soldiers were involved in the war. और you can imagine कि कितना mass destruction हुआ होगा with in absence of every weapons of mass destruction that we have in the present scenario internationally. ये जंग battlefield में लड़ी गई and with those conventional weapons. But there were 6,000 deaths rather 6,000 deaths हुई and more than 40,000 soldiers were wounded 40,000 injuries or wounded soldiers this Swiss businessman Henry Dunant स्विट्जरलैंड से यहाँ इटली घूमने आए थे ये जगह जो है जहाँ ये जंग हुई इसका नाम है सोल्फोरिनो ये एक्चुअली इटली में एक बहुत खूबसूरत लेक गार्डा लेक जिसे कहते हैं और ये बहुत दो खूबसूरत शहरों के दरमियान है वेनिस और मिलान उसके दरमियान ये जंग लड़ी गई बिटवीन वेनिस एंड मिलान देयर इज अ प्लेस सोल्फोरिनो इन इटली सो this man was in a nearby city सोल्फोरिनो के शहर के पास ही एक और शहर है जिसे उस वक्त कास्टिग्लियोन कहते थे ये यहाँ आया हुआ था घूमने के लिए after the war was over this man Henry Dunant visited the place जहाँ ये जंग लड़ी गई and whatever he witnessed there he was moved by that और इसने फिर वापस घर जाने के बाद 1862 में एक किताब लिखी इसी जंग पे और वही किताब मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के फॉर्मेशन का एक प्रिकर्सर बनी दिस बुक एक्चुअली एंड दिस पर्सन रादर शुड बी रिगार्डेड एज the precursor of the modern development of modern international humanitarian law और उस बुक का नाम जो था A Memory of Solferino तो ट्रांसलेशन में कहते हैं but he had written that book in French probably और उस बुक का नाम था Souvenir, I don't know मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ कि नहीं बट इसका नाम यही था Souvenir di Solferino जिसे हम कहते हैं A Memory of Solferino this was actually he wrote a detailed account of his experiences in the battlefield जो इसने देखा और इसने वहाँ जो देखा वो लिखा और उसमें अक्सर जो था बड़ा कैटास्ट्रॉफिक सीन्स थे जो इसने नोट किए फॉर एग्जांपल ही रोट कि आर्मी के जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं वो भरे हुए थे और उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत जल्दी इनएडुकेट होने लगी
and on the field many of soldiers were left wounded and unattended, left for dying. They waited for their death. Many of them were without food and water and medical care for many days, and there was shortage of doctors even after that. उसने कुछ लोगों को कैस्टिग्लियन जा करके कई लोगों को जमा किया, जवान लड़कों को as volunteers, and they went to the field and attended and tended those soldiers. और उनमें से probably उन्होंने 9,000 soldiers को कैस्टिग्लियन लाया सोल्फोरिनो से और उनको ट्रीट किया. और कुछ पर्सनल अकाउंट्स भी लिखे उन्होंने. फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स अ स्टोरी ऑफ अ सोल्जर. वो एक ऐसा सोल्जर था, ही डाइड एंड ही हैड गॉट सम लेटर्स. पोस्ट ऑफिस में कुछ लेटर्स आए हुए थे उसके नाम के. ही सर्वाइव फॉर मेनी डेज. और उसको घर से कुछ ऐसी खबरें आई हुई थी उस लेटर में that Henry Dunant wrote कि अगर वो लेटर पढ़ के मरता, he would have died a peaceful death because there was some good news from his home. So he could not, because there were no persons or kind of जो जिन्हें हम कहते हैं orderlies नहीं थे इन चीज़ों को करने के लिए कि खत कौन लाए और ले जाए. There was also shortage of doctors and nurses and other attendants. So he suggested in that book कि एक international organization होनी चाहिए जो principle of neutrality पे based हो और उसके साथ health care वाले काम करें. And upon his recommendation, Geneva Society for Public Welfare, Geneva Society for Public Welfare, for the first time in 1862 में इसने ये किताब लिखी. 1863 में ही ये historical changes आ गए, and this actually is the year जिस साल में ये सारी changes शुरू हो गई जिन्हें हम कहते हैं development of ICRC, International Committee of Red Cross, जो पहली बार establish हुआ. तो committee में इसको head रखा गया. There was a committee set up और उसमें committee में ये भी एक member थे और इन्हें एक्चुअली फिर कमेटी को ये टास्क दिया गया कि इंटरनेशनली एक ऐसी कन्वेंशन या ट्रीटी बनाई जाए जिसमें ये सजेशंस आपके इनकॉर्पोरेट हो जाएं. एंड दिस फिर उसके व्हाट फॉलोड फ्रॉम दिस कमेटी टास्क इज नोन एज 1864 Geneva Convention. And this is actually the threshold of modern international humanitarian law. इसके बाद से जो सफ़र है बहुत लंबा है till the times of 1949 4 Geneva Conventions जो actually हमें डिस्कस करने हैं और जो मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का बेडरॉक फॉर्म करता है वो ये 4 जेनेवा कन्वेंशंस हैं. बट ये प्रीकर्सर था, यहाँ से शुरुआत हुई एंड देयर वर मच more debates and many conferences and conventions जो बीच में catalyst की तरह आए, and finally the law was cemented and culminated here in 1949 on 12th August. And 1864 में जो Geneva Convention हुई, it set up national committees that would supply voluntarily medical personnel और उनको फिर armies को दिया जाएगा और वो वॉलंटरली काम करेंगे और उस बॉडी में एक यूनिफॉर्म होगा और उस यूनिफॉर्म में उनको देयर शैल बी अ डिस्टिंक्टिव साइन, एक अलग साइन होगा उनका, रेड क्रॉस जिसे हम कहते हैं. और रेड क्रॉस के नाम से आप देखते हैं मेडिकल एंड इमरजेंसी जैसे एम्बुलेंसेस हॉस्पिटल्स में वो क्रॉस होता है इन अ सर्कल, इस तरह वाइट बैकग्राउंड में रेड क्रॉस जो होता है. And for the first time, because he said they shall be regarded as neutral persons and they will wear a white armband और उस armband पे एक red cross होना चाहिए ऐसा, which is a distinctive sign कि ये neutrals हैं. और सारी countries एक uniform sign adopt करेंगे for medical corps and personnels और facilities, for example hospitals हैं, ambulances हैं और treatment homes हैं, जो भी होंगे उसमें ये होगा ये रेड क्रॉस एज अ डिस्टिंक्टिव साइन. एंड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर उनको न्यूट्रल माना जाएगा. एंड दिस इज एक्चुअली द जेनेवा कन्वेंशन, लैंडमार्क जेनेवा कन्वेंशन, जिसका नाम पूरा नाम ये था जेनेवा कन्वेंशन फॉर द एमेलियोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ wounded in इन द फील्ड. पूरा नाम ऐसा है कि ताकि मिसलीड ना हो जाए. कंडीशन
कंडीशन ऑफ आर्मीज इन फील्ड। बाकी सारी जेनेवा कन्वेंशन जो 1949 की मिलेगी उनका नाम भी आपको ऐसे ही मिलेगा। इसका नाम पूरा यही है, पूरा तो लिखेंगे नहीं मगर मैं कीवर्ड्स लिख रहा हूँ। जेनेवा कन्वेंशन फॉर द एमेलियोरेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ wounded in armies in the field। तो फील्ड में जो आर्मी वूंडेड हो जाए उनकी कंडीशन के एम्यूलियरेशन के लिए ये कन्वेंशन पहला लाया गया। और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी एंड डिस्टिंक्टिव साइन, इसने पहली बार, और यही जो रकम इसी के यही हेनरी डुनार्ट फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस माने जाते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस, या जिसे हम ICRC भी कहते हैं। और फिर वो रेड क्रॉस, रेड क्रीसेंट एंड रेड क्रिस्टल की एक अलग फिलॉसफी और काइंड ऑफ एक्रिमोनियस डिबेट है, उसमें हम नहीं जाएंगे बिकॉज इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल सर्टेन ईस्टर्न नेशंस फेल्ट कि दिस क्रॉस रिप्रेजेंटेड द क्रिश्चियन बिलीफ, तो फिर रेड क्रीसेंट भी ऐड किया गया और ज्यूज के लिए फिर रेड क्रिस्टल ऐड किया गया। दैट्स ऑल। अब हिस्टोरिकली इसके बाद भी बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है टिल 12 अगस्त 1949, मगर हेनरी डुनांट ने एक प्राइमरी रोल अदा किया and this man got Nobel Prize in 1901 also। 1901 ही में शायद 1906 में मिला था for his work Nobel Peace Prize। but 1864 is the year, 63 ही कहेंगे हम, 63-64, जब मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की शुरुआत हो गई। एंड देन आफ्टर दैट बहुत सारी चीज़ें और हो गई, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट मैं बस उनकी तरफ रेफर करूँगा। फॉर एग्जांपल दिस to that was a contemporaneous labor code या labor code जिसे हम कहते हैं in the US civil wars। US में civil war चल रहे थे उस time, and there was labor code of 1864, and then followed after 4 years there was the famous 1868 St. Petersburg Declaration। इनको डिटेल में नहीं जाना है बट इनका कंट्रीब्यूशन ये है, दे आल्सो इन अ वे इफेक्टेड इन मिनिमाइजिंग एंड मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ वॉरफेयर बाय रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ द हॉस्टिलिटीज एज वेल एज द वेपन्स दैट कैन बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल सर्टेन, ये सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन ने इट प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ बूबी ट्रैप सब्सटेंसेस जिन्हें हम कहते हैं, या फल्मिनेटिंग सब्सटेंसेस जो धोखे से अचानक फट जाते हैं। and you can imagine कि 1868 में कितनी कम तरक्की रही होगी, and internationally people were concerned by the usage of such weapons in wars or hostilities, but right now the realities are a bit harsher than them, considering the conditions across the geopolity of the world presently. So this is 1868 St. Petersburg के बाद 1800 Brussels declaration आई, Brussels Declaration of 1874 में आई ये, probably 74, and then 1880 का ऑक्सफोर्ड मैनुअल। अगर आप टाइमलाइन में इसको नोट भी करना चाहें उससे फायदा ये होगा that when you are writing these things in examination or anything, you can write a simple note regarding those, not a detailed account of each of them। ऑक्सफोर्ड मैनुअल के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके बाद जो आई इस सीरीज़ में, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, ये बहुत ख़ास थी, और इसके बाद जो नेक्स्ट लैंडमार्क चीज़ आई वो हेग कन्वेंशन ऑफ 1899 है। हेग कन्वेंशन 1899 और 1907 भी इसके साथ कह सकते हैं हम। ये हेग कन्वेंशन ऑफ 1899 और 1907 में आई। देयर वाज सम माइनर चेंज इन 1929, तो नाउ वी आर इन द 20th century, एंड फाइनली हेग कन्वेंशन 1899, 1907 और 1929 के बाद वी हैव द मॉडर्न लॉ, दैट इज जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 जिसे हम कहते हैं। ब्रीफ अकाउंट देते हैं, वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट लेक्चर।
इन ट्रीटीज का सम अप फिर किया गया, जो अलग अलग ट्रीटीज बिखरी हुई थी, कुछ को माइनर चेंजेस के साथ री अडॉप्ट और री इनैक्ट किया गया, पहले भी उनके एलिमेंट्स थे। और ऑन 12th August, हिस्टोरिक डे ऑफ 12th August 1949, were adopted these four Geneva Conventions, जिन्हें हम four Geneva Conventions भी कहते हैं। And these four conventions pertain to four different subjects, and they form the modern bedrock or the basic substance and matter of modern international humanitarian law. और इसमें चार subjects से deal किया गया है, and it has two protocols of 1977 इन कन्वेंशंस के साथ। प्रोटोकॉल 1977 का है, जिसने थोड़ा सा और इसको लिमिट कर दिया, बिकॉज अर्लियर ये कन्वेंशंस दे वर नॉट एप्लीकेबल टू नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, अगर दे वर एप्लीकेबल ओनली इन केसेस ऑफ इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। बट नाउ लोकलाइज्ड फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल इंसर्जेंसी वगैरह बहुत बढ़ने लगी बाय द एंड ऑफ 20th century, 1970s 60s में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिविल वॉर्स एंड कोल्ड वॉर एरा। तो फिर 1977 में जो दो प्रोटोकॉल्स आए, those protocols made applicable these principles even to the non-international armed conflict. So there are four conventions, उनका नाम डिटेल में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, but you can write the subjects on which they pertain to. For example, first convention जो है इनमें से, it relates to the amelioration of wounded and sick. इसको हम रिपीट अगर करना होगा तो WS लिख दूंगा मैं एब्रिवेटेड फॉर्म में, wounded and sick in armed force. इसी के साथ फिर जोड़ा गया, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू लैंड। अब अगर सीज में हो तो फिर क्या हो, तो इसीलिए wounded, sick and shipwrecked, दूसरी कन्वेंशन shipwrecked members of armed force in sea. That is related to sea, or sorry, at sea है वहाँ, because in is not a proper preposition, at sea. And then there is third is related to the treatment of prisoners of war. Treatment of, मैं prisoners of war को POW कर रहा हूँ, prisoners of war who are regarded as hors de combat, और ये international humanitarian law की बड़ी एक की टर्म है hors de combat। ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज़, जो की टर्म्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं जिन पे बेस्ड हैं ये चार जेनेवा कन्वेंशंस। इट इज़ वेरी आर्डुअस एंड प्रिटी डिफिकल्ट task to sum up or to go through the provisions of each of the convention in detail, given the stage of the semester. So treatment of prisoners of war, third convention, and then there is fourth convention जो civilians से related है, protection of civilians in times of war. Civilians or civilian persons in times of war. And two protocols इसके साथ ही हैं. We know that they extended the scope of these conventions to non-international armed conflict. So finally, these all principles, starting with the times of pragmatically Hugo Grotius, and then this person named as the contemporary of Grotius, that is Juan Martins, and then finally through Henry Dunant's efforts and ICRC, and following that जो बाद में बीच में कन्वेंशंस छोटी छोटी होती रहीं, जिसमें लाइबर कोड है और पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन है और ब्रसेल्स डिक्लेरेशन है, ऑक्सफोर्ड मैनुअल है और हेग कन्वेंशन है 1899, 1907, 1929 के, एंड फाइनली वी हैव द फोर जेनेवा कन्वेंशंस जो एक्चुअल सब्सटेंस है इस वक्त इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का। अब ह्यूमैनिटेरियन लॉ का पर्पस क्या है? What is the purpose or scope of international humanitarian law? Origin तो हो गया, development भी हो गया. The purpose is that
international humanitarian law intends to mitigate the effects of war, and it tries to regulate the conduct of hostilities, यानी जंगें किस तरह से लड़ी जाए, उनमें थोड़ा बहुत रेगुलेशन आ जाए. तो मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ वॉर कैसे होगा? इट इज़ अचीव्ड बाय सेवरल प्रिंसिपल्स जिन पे ये बेस्ड हैं जेनेवा कन्वेंशन. जैसे अब हम डिस्कस करेंगे उनको, जैसे प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है कि जितना प्रोपोर्शनली नुकसान करना ज़रूरी है वॉर के लेजिटिमेट एंड्स को अचीव करने के लिए उतना ही करना चाहिए. इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी है जिसमें न्यूट्रल पर्सन्स को या नॉन कॉम्बैटेंट्स को या दोज पर्सन्स who are hors de combat, that is persons who are no longer involved in the hostilities or who have raised their arms up, who have surrendered, who have been captured, or who are wounded or sick because by reasons of the war, they need to be protected and they need to be regarded as neutral persons. इस तरह के प्रिंसिपल्स हैं एंड दिस हैव बीन अचीव्ड बाय जो बेसिक इनमें है कॉमन आर्टिकल 2 और कॉमन आर्टिकल 3. द मोस्ट डिस्कस्ड इज द कॉमन आर्टिकल 3 जो चारों जेनेवा कन्वेंशंस में बिल्कुल सेम लैंग्वेज में है. कॉमन आर्टिकल 3 विल डिस्कस दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन यू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ these things and together with the highlights that I have provided. Thank you very much.